In this video, we will discuss the quantity theory of inflation, its introduction and definition. The quantity theory of inflation is same as the quantity theory of money. So you can also say this is the quantity theory of money. Introduction and definition part we will discuss here. Uh, this can also be said as the monetarists' views on inflation. तो ये तीन टॉपिक एक जैसे ही हैं, सिमिलर ही हैं और यू कैन से सेम ही हैं. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड monetarists' views on inflation. This is the oldest theory. ये सबसे पुरानी थ्योरी है. Propounded in 1566 by French economist Jean Bodin. Jean Bodin was a French jurist and political philosopher, member of the Parliament of Paris, and professor of law in Toulouse. Toulouse is the fourth largest city in France. तो सबसे पहले 1566 में फ्रांस के ज्यूरिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट थे जीन बॉदेन, जिन्होंने ये थ्योरी सबसे पहले दी थी. फर्दर इट वाज डेवलप्ड बाय इटालियन इकोनॉमिस्ट Davanzati in 1588. Here it is single T, not double. English economist John Locke in 1691 and David Hume in 1752. तो अलग अलग टाइम पे इस थ्योरी में और इम्प्रूवमेंट होती गई. 1588 में डावनजाती ने इम्प्रूवमेंट की, इटली के थे ये. 1691 में जॉन लॉक ने, 1752 में डेविड ह्यूम ने. Bernardo Davanzati was an Italian agronomist, economist, and translator. John Locke was an English philosopher and physician and commonly known as the father of liberalism. David Hume was a Scottish philosopher, historian, economist, librarian, and essayist. In 20th century, it was extensively developed by Irving Fisher, Marshall, Pigou, रॉबर्टसन एट्सेट्रा. तो 20th सेंचुरी में इन इकोनॉमिस्ट्स ने इसमें और डेवलपमेंट की, एक्सटेंसिव डेवलपमेंट की. इरविंग फिशर was an American economist, statistician, and inventor. Eugenicist. Eugenics is a set of beliefs and practices that aim to improve the genetic quality of a human population, historically by excluding people and groups judged to be inferior or promoting those judged to be superior. So Irving Fisher was eugenicist and progressive social campaigner. He was one of the earliest American neoclassical economists. Joseph Schumpeter described him as the greatest economist the United States has ever produced, an assessment later repeated by James Tobin and Milton Friedman.
Alfred Marshall's book Principles of Economics 1890 was the dominant economics textbook in England for many years. It brings the ideas of supply and demand, marginal utility, and costs of production into a coherent whole. He is known as one of the founders of New Classical Economics. Arthur Cecil Pigou was an English economist. As a teacher and builder of the School of Economics at the University of Cambridge, he trained and influenced many Cambridge economists who went on to take chairs of economics around the world. His work covered various fields of economics, particularly welfare economics, but also included business cycle theory, unemployment, public finance, index numbers, and measurement of national income. Dennis Robertson was an English economist who taught at Cambridge and London universities. तो 20th सेंचुरी में इन लोगों ने और ज़्यादा डेवलपमेंट की इस थ्योरी में. प्रोफेसर Milton Friedman was an American economist who received the 1976 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for his research on consumption analysis, monetary history and theory, and the complexity of stabilization policy. Friedman's challenges to what he later called naive Keynesian theory began with his 1950s reinterpretation of the consumption function. Now, Milton Friedman has put forward modern quantity theory. इन्होंने ये दी आगे. In his book, The Purchasing Power of Money, published in 1911, Irving Fisher puts forward transaction approach to quantity theory. जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है इसकी दो अप्रोचेस हैं, ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड कैश बैलेंस अप्रोच. तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे ट्रांजैक्शन अप्रोच की, गिवन बाय इरविंग फिशर. Now, definition of quantity theory of money or quantity theory of inflation, or what is the view about inflation of Fisher. According to Fisher, other things remaining unchanged, अगर हम बाकी चीज़ों को ना चेंज करें, as the quantity of money in circulation increases, तो जैसे ही मनी की क्वांटिटी बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस लेवल इंक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो प्राइस जो है वो डायरेक्ट बढ़ जाती है. एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी. तो जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्राइस इज़ द फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई. Price depends upon money supply. There is a positive relation. There is a proportional relation. Positive relation है, proportional relation है. Direct and proportional. Direct proportion. तो जितने परसेंट मनी सप्लाई बढ़ेगी उतने परसेंट ही प्राइस बढ़ जाएगी. तो ये क्यों होता है? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ने से इन क्वांटिटी थ्योरी वाले जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं इनके अकॉर्डिंग मनी का एक ही फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी की क्वांटिटी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग उस सारे पैसे को स्पेंड करेंगे क्योंकि मनी का एक ही काम है स्पेंड करना. तो जब लोग सारी मनी को स्पेंड करेंगे, मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके प्रोपोर्शनेटली ही प्राइस बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि सप्लाई फिक्स है गुड्स की. गुड्स की सप्लाई नहीं बढ़ सकती. गुड्स की सप्लाई क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि ये मानते हैं कि ये
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर चीज़ों की सप्लाई नहीं बढ़ सकती, तो सारी मनी को स्पेंड करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो इस वजह से प्राइस बढ़ेगी, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो यू कैन से quantity of money is the main cause of inflation in this theory. So this was the introduction and definition of quantity theory of inflation, quantity theory of money, or monetarist view on inflation. Now for the assumptions, explanation, criticism, you must watch other parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.